Good evening, everyone. Oh, I think good evening. Uh, so I think today, because the weekend is not there, so some of the students are less in numbers. But anyways, we'll provide you the recording so you can see, you can watch the important things which we'll discuss here today. First of all, I want to tell you that some of the students who are here, I have pointed out, like name is Pratul, Abhijit Singh Yadav, Mufid Khan, Ankush Gavit, Abhay Badaya, Sachin Kumar, Nivid, Ekjot, Vivek Wankhede, Abhay Pratap Singh. These 10 students, any one of you is here out of these 10 students? No one is here. I think these students are not getting the mail or they are not checking the mail and therefore they are missing the webinars. And because I repeatedly asked them about their contacts, and since they are not actually receiving the mail or they are not checking the mail, that is why they might not be in part of this webinar. So I want to tell them, uh, maybe I'll share the recording and I'll find out also that those students uh, who are watching this uh, on a later date and or those who are present and any one of these 10 names are there, please send me uh, your contact number, your optional place of preparation, and number of attempts, right? Because your email id is there with me, right? So I think you might not be added in the group also because you're not aware of this webinar because you have taken the admission directly from the uh, is hub. So maybe that reason is there. Anyways, so if some of your friends are there, you just inform them, or or else we'll provide, means they can contact me directly also. Okay, fine, let's thank you and move to the next part. Like on that day, on Sunday evening, we have discussed that in the ethics part, we have to be elaborative only on what is asked, not what we know. Because UPSC won't be awarding you marks for the things which you know but not asked, right? And most of you have already messaged me also regarding this type of concept, and you are much appreciative about this concept because some of you who have appeared in the mains, you might have seen that it's very difficult to complete the paper if you are going to write what is not asked. So what is asked, if you are writing it, elaborating on only what is asked, you will be completing the paper also and you'll be scoring more than your own potential also, right? Because most of the candidates will not be either complete the whole paper or they will be writing what is not asked, and therefore their marks will not be as per their own potential. Well, it will be lesser than their own potential of ethics, right? That is why this webinar is also called how to maximize your marks beyond your potential. That means your potential is of 350 marks in total in GS. How can you score 400 plus? Or your potential is around 300. How can you score more than 350? Right? Because it's based on your potential only. Right? So coming to the next part, in today's webinar, I told that we'll be talking about the next part, next thing in ethics, which is also very important. That is attempting the case studies. Right? Attempting the case studies questions. Okay, and these questions will be based on options, right? You can you might have already seen that there are various uh, case studies asked in the examination where generally there are two types of case studies asked in the examination where they'll be asking you what are your options of level as a collector or as an SP, what are your options, and second part will be uh,
what will be your course of action. Okay, these two questions are there. Generally these days they are asking you directly that what will you do, what is your course of action, like that they are asking directly. Or they can also ask you that what are the options available to you, what will be your course of action, or what will you do. Okay, these things now we are trying to understand that what to write in such questions, right? Generally many of the candidates are writing three options, some are writing four options, some are writing five options also, and finally concluding out of these five which will they do, which will be their best option. This is the way most of the candidates are tackling these questions. Let us ask one question, pertinent question, that how many options should we write? Whether we should write two options or three options or four or five. The more you write, the more marks will you get. Is that so? Or the more if you write, your chance of completing the question paper on time as well as that particular question on time is difficult, right? So suppose if there is one question, let's see if there is one question which is asking you what are the options available to you, okay, and what will be your best course of action and why. Okay, this will cover almost all types of case studies. That means what are the options available, what is your option out of that options available, and why. Okay, so let us see. First of all, let's clear that how many you will write. Before that, we'll see that at least option one everybody has to write, right? Option one everybody has to write, in which the option one will be about the maintaining the status quo. Okay, maintaining the status quo, it means what? It means like what is going on will go, मतलब जो चल रहा है सो चलने दो. Whatever the question is there, there are, you can write at least the first option as कि maintaining the status quo, जैसा प्रोसीजर जैसा कन्वेंशन था वहां पे वो कंटिन्यू रहे, right? Maintaining the status quo, that can be the first option. Option 2 can be, option 2 can be extreme or maybe some drastic action, right? Action 2, option 2 can be some extreme or direct or drastic action. That means something which is extreme, not to be followed. Okay, you people are doing this, and now you're writing all the extreme options also. And option 3 will be you have to write the best course of action. You have to write the best course of action. Okay, so generally there will be three ways to write an answer, three options, right? Option will be the maintaining the status quo, what is going on will go. Option 2 will be extreme or some drastic action, and third will be the best course of action, which is the most important part of this question is best course of action, on which your whole marking scheme is dependent, right? Like but some of you want to write five options. Let's see if you can write or not. Suppose we include option 4 also and option 5 also. Let's see, is it possible, or is it a repetition. See, if you're writing the extreme or drastic, maintaining the status quo, right? Maintaining the status quo will be the always the first option, right? Option 3, best course of action, ये तो लिखना ही है. In any ways you have to write the best course of action. So only what you can do, the extreme and drastic action can be many, right? ये तो fix हो गया. This is fixed, this is fixed. Only the extreme and drastic action can have multiple ways of degree and condition. मतलब कोई कम extreme होगा, कोई ज्यादा extreme होगा, something which is less extreme, something which is more extreme. Only that much will be there, so that some lesser extreme can become the option 4, and then maybe some other extreme can become the option 5. Okay, right or wrong? ठीक है, only this can be changed. Like for example, I will take a transfer, है ना, I won't do, I will go to the court, I will file a PIL, है ना, I will go and arrest him, है ना, something like that can be there always.
सो एक्सट्रीम एक्शन क्या है, उसके अलग अलग वैरायटी होंगी. So different different varieties will be there for the extreme or drastic action. So you can use any one in fourth or fifth option. Like that, you can write options. But they will also ask you that what are the options available to you and which one you will do. So you have to write the merits and demerits also, merits and demerits of each option, right? Now you try to understand that the merits and demerits of option one, right, will be different. You can write भाई merits जो maintain the status को क्या है, जो भी चल रहा है चलने दें. So you write the merits and demerits. You will write the merits and demerits of best course of action also, merits and demerits. Here also merits and demerits. But for the option two, where it is a drastic action, है ना, the merits and demerits, merits and demerits will be almost similar. जैसे you will go to the court, you will seek a transfer, you will resign from the job, you will become a whistleblower, something, anything could be the option two. So सबका merits and demerits will be very similar. So you, whether you create option 5 or option 6, it will not matter much, but your time will be wasted for writing merits and demerits, which is very similar in option 2, 4, 5 and 6. ठीक है, तो आप वो बहुत सिमिलर होगा. सो यू विल बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम ओनली. सो इंस्टेड ऑफ दैट, जस्ट write three options: option 1, option 2, option 3. Option 2 will be extreme drastic. One action, one option is sufficient for option 2. उसको अलग डिग्री और उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने से कोई फायदा नहीं है. जस्ट राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, दैट्स ऑल. ओके, क्लियर है? ठीक है. So now we'll see that key. That is why I will tell you that just three options is sufficient. But write that when it is asking you that how many what are the expected course of action from your side, or maybe they can ask you that what are the various courses of action available to you. उस केस में लिखना है you have to write three options. If they're asking you what will you do, what will be your course of action, what will be the best course of action in this case, अगर मतलब ऐसा लग रहा है कि they are asking only for the best course of action or what you will do exactly, so considering that what you will do will be the best course of action only, so for that there is option number 3, मतलब एक ही ऑप्शन लिखना है with merits and demerits. Okay, and then you have to explain that why you are doing this option as the best course of action, why. ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. यहाँ पे तो क्लियर होगा, बहुत इजीली है, बहुत इजी है ना. सो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना कि इफ यू आर राइटिंग मोर ऑप्शंस 4 5, तो जस्ट टाइम की वेस्टेज है. एंड 15 मिनट्स से यू हैव टू कंप्लीट वन केस स्टडी. सो इट इज डिफिकल्ट दैट इफ यू राइट अननेसेसरी थिंग्स, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द केस स्टडी इन स्टूपिडेड टाइम ऑफ 15 मिनट्स. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर गुड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी हेल्पफुल कि सर ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कैसे पता करेंगे कि यही बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है. हाउ विल डिसाइड दैट एज ए एसपी और कलेक्टर दिस इज माय बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, बिकॉज यू आर स्टडिंग नाउ, यू डोंट नो दैट व्हाट इज देयर इन द फील्ड, इन द प्रैक्टिकली क्या होता है. पर बेस्ड ऑन योर लिमिटेड नॉलेज और बेस्ड ऑन योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग द till you are writing the examination or seeing various case studies up till now, so एक पेरिफेरी बना लो आप कि आप ये एक होगा तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा. सो let us discuss that. This will be the way in which you can identify the best course of action. So let's talk about the qualities of best course of action. Qualities या the parameters on which you will be ना distinguishing it from the rest of the ऑप्शंस कि 5 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है या 2 ऑप्शन, तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही क्यों है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. ठीक है, क्या क्या रीजन हो सकता है. नंबर 1 इट विल बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी एथिकल. ऑब्वियसली इट विल बी एथिकल. व्हाई? एथिक्स का पेपर है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपको करना है, आप कुछ करना है, जो भी आप देना सोसाइटी को, कुछ भी आपका एक्शन होगा एज ए पुलिस और एज ए कलेक्टर, सो ऑब्वियसली इट विल बी एथिकल ओनली. एथिक्स पेपर में अनएथिकल का तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो ही नहीं सकता है. ठीक है, इट शुड बी एथिकल. Then it should be legal also. You will be acting as a collector or SP
or some other principle, whatever the case study says. You cannot talk about something which is illegal, है ना, in the best course of action. You can talk something maybe here and there in extreme action, but the best course of action, लेकिन उसमें भी कोशिश करना है कि लीगल और एथिकल में बने रहो, भले एक्सट्रीम में जाओ, राइट. बट क्वालिटी ऑफ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगा, एज ए कलेक्टर एसपी इट शुड बी लीगल, इट विल बी लीगल. आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी जो राइट्स मिले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपको लॉज हैं, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी राइट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, तो वो लीगल रहेगा, राइट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट शुड बी प्रैक्टिकल. मतलब यू शुड नॉट सजेस्ट समथिंग एज ए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो theoretically possible है but not practically. For example, if you talk about the capital punishment, है ना, or and if you're saying कि yes, it should be given to the person who is doing the rarest of the rare crime, है ना, maybe whatever the that is the murder in a brutal way, or whatever maybe rape or whatever things they are doing as a hardened criminals, so they should be hanged on the streets. See, ऐसे कहने को तो ये ethical है कि भैया उन्होंने इतना गलत किया, है ना, लीगल भी है, क्योंकि हैंग तो होते ही हैं ऐसे लोग रेयर रेयर केस में, पर सवाल है कि प्रैक्टिकल है कि नहीं का. दे आर हैंग्ड, दे विल बी देयर विल कैपिटल पनिशमेंट, बट नॉट इन द स्ट्रीट्स और नॉट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. ये प्रैक्टिकल नहीं होता इंडिया में. ये कहीं होता होगा अरेबिया में या कहीं भी होता होगा, बट नॉट इन इंडिया. ठीक है, सिमिलरली, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन जिसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं है, यू शुड नॉट से दैट any best course action that is not practiced in convention, मतलब प्रैक्टिस ही नहीं होता है और वो प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर दूर है, उटोपियन कॉन्सेप्ट है. मतलब सुनने में अच्छा लगेगा पर इट इज नॉट प्रैक्टिकली नहीं होता है वो. तो वो उसको हमको नहीं मानना है कि दैट विल बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, राइट. तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये बात थ्योरेटिकल है बट नॉट प्रैक्टिकल. ओके, सो दैट इज अनदर वे टू जज दैट विच इज योर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. Also, it should not have escapist tendency. ठीक है, escapist tendency नहीं हो जो प्रैक्टिस, जो ये आपका बेस्ट कोर्स एक्शन हो, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लगभग हर क्वेश्चन पूछा था. ऑल द 6 क्वेश्चन विल हैव दिस, व्हाट विल यू डू, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एज ए कलेक्टर, एसपी और ए प्रिंसिपल, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज. सब चीज में यही है ना. एथिक्स इज बेसिकली व्हाट विल यू डू, आपका बेस्ट कोर्स एक्शन. तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. ठीक है, इट शुड नॉट बी हैव एस्केपिस्ट टेंडेंसी, मतलब उसमें भगोड़ा वाला फीलिंग ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ कोई लिख देता कि आई विल सीक ट्रांसफर, कि भाई ऐसा मुसीबत आ गई है, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो आई विल सीक ट्रांसफर, कोई और आएगा वो देखेगा. दिस इज व्हाट इज एस्केपिस्ट टेंडेंसी, भाग जाओ छोड़ के मैदान. ठीक है, यहाँ पे नहीं चलेगा. आप कलेक्टर हो एंड यू विल से कि आई विल सीक ट्रांसफर, आई डोंट नो व्हाट टू डू. दिस इज नॉट, यू हैव टू फेस द सिचुएशन एंड यू हैव टू टेक एक्शन एंड द डिसीजन ऑन स्पॉट. So seek transfer is not the valid course of action. It will be as a escapist tendency. कोई लिख देते हैं I will not do corruption even forced by the minister, but I will resign my job. ठीक है, ना तो ये प्रैक्टिकली होता है, ना कोई आईएएस रिजाइन कर रहा है, बहुत रेयरली रिजाइन होता है फॉर द एंटी करप्शन, मतलब एज ए क्रूसेडर बन के. फॉर एग्जांपल, कोई मिनिस्टर ने बोला आपको ये करना है और आप बोले नहीं करेंगे, तो आप यहाँ फंसा हुआ है, मतलब ऐसा केस स्टडी बोलता है, तो व्हाट विल यू डू. अब आप उसमें लिखते हैं कि आई विल रिजाइन फ्रॉम अ जॉब. तो दैट इज एस्केपिस्ट टेंडेंसी. अरे यू हैव टू फेस दिस थिंग दैट करप्शन इज देयर, मिनिस्टर इज आस्किंग यू टू गिव हिम, मतलब इस वाले के प्रोजेक्ट से कुछ मनी दो. then you have to decide that how you are going to how you do the what is the best course of action to prevent such corruption thing, right. There is no escape strategy कि I'll seek transfer, I'll resign my job. तो जो आएगा उसको अपना देखेगा, because the problem will not be changed, you will be changed, but someone else will have to face the same problem. तो you have to write the answer कि भाई मुझे क्या करना चाहिए उस मतलब सिचुएशन में. ठीक है, somebody will also write आई विल आस्क माई सीनियर्स, ये भी बहुत लोग लिखते हैं, है ना, एंड फॉलो देयर एडवाइस. बट दे डू नॉट राइट दैट कि व्हाट सीनियर्स हैव टोल्ड टू देम टू डू. भाई ये तो एस्केपिस्ट टेंडेंसी हुआ ना. यू विल से ओके आई विल आस्क माय सीनियर एंड कंसल्ट, आई विल डू माय द बेस्ट कोर्स एक्शन एज पर द सीनियर्स एडवाइस. अब हाउ यू विल नो दैट सीनियर इज टेलिंग यू राइट और रॉन्ग. अगर राइट बोला या रॉन्ग बोला तो उसको लिखिए ना पेपर में, तभी तो एग्जामिनर जानेगा
कि सीनियर ने क्या बोला और आपने क्या लिखा। सीनियर ने तो कुछ बोला नहीं है। इट इज योर ओन, इट्स क्या बोल, योर ओन विश। यू योरसेल्फ हैव डिसाइडेड, you yourself have decided that this you are going to do, right? So how you are writing that, ask, I will ask my seniors, बहुत लोग लिखते हैं, ये एग्जाम में भी लिख देते हैं, तो उनके नंबर कम हो जाते हैं। ये सीनियर से आप पूछ लिए, बट यू राइट इन द पेपर ना दैट व्हाट सीनियर हैव टोल्ड यू, अदरवाइज हाउ विल द एग्जामिनर नो कि ओके सीनियर हैव टोल्ड यू टू डू दिस। That means you are playing safe. You do not know what is the answer, so you're writing, I will ask my seniors and follow their advice. They are more mature, they are more experienced than me. But also, how come senior will know that eh, the the answer or the solution of this question is this? ठीक है, आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। So better not to write like this कि I will ask my senior, I will consult my senior. You can consult, but then you write the answer कि what they have told you to do. तो बेटर है कि यू राइट योर ओन डिसीजन, डोंट राइट कि नहीं होता है ऐसा। प्रैक्टिकली यू सीक द एडवाइस फ्रॉम द सीनियर, बट प्रैक्टिकली करना आपको ही होता है जो आप चाहते हैं, राइट। हम लोग भी सीनियर से पूछते रहते हैं, लेकिन डिसीजन फाइनली हमको ही करना पड़ता है। वी कांट से कि नहीं नहीं हम छोड़ दिए, पूछ लिए, हो गया। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ वेज टू गेट द एडवाइस फ्रॉम वेरियस, मतलब जो भी सीनियर्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, पर डू एज पर योर ओन व्हाट यू फील इज राइट। ओके, so also you cannot write I will go to court and seek the court decision. ये भी बहुत ही बेकार ऑप्शन है। मतलब द बिकॉज इन दिस सिचुएशन you have been asked कि what you will do and you are saying I'll go to the court and let court will decide what to do. कोई कोई काम होता है जैसे कि राइट हो गया, या कंडीशंस ऑफ मान ली कि फ्लड आ रहा है, देन यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग एंड डू, तो यू विल गो टू द कोर्ट। ऐसे नहीं, मतलब कोर्ट आप नहीं जा सकते ऐसे बिना बात के। इवन फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट में एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट यू वोंट गो फॉर देयर एडवाइस। इवन द एग्रीवीड पार्टी विल गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट यू, राइट। तो ये तो बिल्कुल बेकार है कि आई गो टू द कोर्ट एंड सीक एडवाइस। दिस इज a paper of ethics in which basic case studies are given, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक टाइप ऑफ केस स्टडी है। उसमें भी आप ऐसा लिखोगे आंसर कि आई एम नॉट श्योर, मतलब आई विल गो टू द कोर्ट, आई विल आस्क द सीनियर, तो एग्जामिनर वो नंबर कैसे दे देगा? नहीं देगा, राइट। ऑल्सो कोई कोई लिख देता है आई विल फाइल PIL, वो भी ऑलमोस्ट वैसे ही कोर्ट जैसा है। एंड ऑल्सो इफ यू राइट समथिंग वेग, है ना, वेग ऑप्शंस कि ये करूंगा मैं, मतलब यू आर नॉट वेरी क्लियर इन योर आंसर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बहुत श्योर नहीं हो, क्लियर नहीं हो। अगेन दिस विल आल्सो हैव ए एस्केपिस्ट टेंडेंसी बिकॉज एग्जामिनर विल नॉट बी एबल टू नो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड कॉन्सिक्वेंटली ही विल डिडक्ट योर मार्क्स। ये आप बिल्कुल एश्योर्ड रहें, ठीक है। केस स्टडी में दे वांट टू नो दैट व्हाट इज योर टेक ऑन दिस केस स्टडी, व्हाट यू विल डू एज ए कलेक्टर, एज ए SP, और वट एवर केस स्टडी हैज assigned to the post, right? And also you will find that the best course of action will resolve the ethical dilemmas, ठीक है। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या करता है, आपका एथिकल डिलेमास रिजॉल्व कर देता है, पूरा सॉल्व कर देता है, ठीक है। सो जो जो भी एथिकल डिलेमास है, they will not be there, all ethical dilemmas will be resolved, and this way you can find out that this is way you can identify your best course of action. यू विल बी वेरी मच क्लियर कि दिस दिस, अगर इसमें ये सब चीज नहीं है, एथिकल होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल दैट एथिकल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, बट इट शुड नॉट हैव एस्केपिस्ट टेंडेंसी, ये नहीं होना चाहिए किसी में, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। एंड देन यू विल आल्सो फाइंड दैट इट विल रिजॉल्व योर एथिकल डायलेमास, ठीक है। तो आपके जो एथिकल डायलेमास आते हैं इट विल रिजॉल्व। सो इफ ऑल दीज characteristics are there to that course of action, consider it will be the consider it that it is the best course of action. Okay, यहाँ तक क्लियर है सारा? नाउ लेट्स, ये तो हो गया, ओवर हो गया, मतलब इससे ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल बी गोइंग टू आइडेंटिफाई द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, जो कि 3 होते हैं, 3 में द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। कमिंग टू द एथिकल डायलेमा,
इज इट नेसेसरी टू यूज एंटायर द प्रोवाइड और कैन फिनिश द केस? देखो डिपेंड करता है मतलब हाउ मच यू आर गोइंग टू राइट इन 15 मिनट्स और कितना है, तो ऐसा नहीं है, 2-3 पेज तो कवर करने ही पड़ेंगे, उतना तो लंबा होता ही है केस स्टडी। केस स्टडी इज नॉट सो शॉर्ट दैट कि अब एक 1.5 पेज में कर पाएंगे, इट्स लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट एंड इलाबरेट। आई टोल्ड दैट इलाबरेट ऑन व्हाट इज आस्क्ड, तो यू कैन ऑब्वियसली राइट सो मेनी थिंग्स, ठीक है। देन इट विल गो बियॉन्ड 3 पेज बिकॉज 20-20 मार्क्स का है, राइट। तो 3 पेज से ऊपर 4 पेज 5 पेज डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज, द केस स्टडी कैसा लिखा है, कितना टाइम अवेलेबल है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन राइट एज मच एज पॉसिबल। डोंट वरी अबाउट द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, वेदर वी शुड फॉलो द वर्ड लिमिट और द टाइम लिमिट और नन और बोथ, ठीक है, विल डिस्कस, वो भी कंप्लीट क्लास है। ओके, सो एथिकल डिलेमा। हाँ, ये बात गजानन सही है कि सब टॉपर्स क्योंकि सेट फिल द पेजेस, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि एज मच एज पॉसिबल फिल द पेजेस, पर उसका एक प्रोसीजर है, यू कैन नॉट राइट द बोगस आंसर एंड जस्ट फिल द पेजेस, दैट आई विल बी डिस्कसिंग। बहुत ही देखो टॉपर्स बोल देते हैं कि फिल द पेजेस, जस्ट एक ब्लैंक स्टेटमेंट है। शुड वी राइट मेरिट्स ऑफ ऑप्शन वेदर इट इज नॉट, नो। अगर पूछा है ऑप्शंस का मेरिट पूछा है, डिमेरिट तभी लिखना है ना। व्हाई यू डू, है नॉट लाइक दैट कि सबका लिखे, बिकॉज टाइम भी देखना ना, उसके बाद उसमें और पार्ट्स होंगे, सो कितने पार्ट्स में कितना वेटेज है, कितने मार्क्स है, यूज योर इंटेलिजेंस कि भाई 5 नंबर का है तो उसमें 3 ऑप्शन लिखना ही बहुत है। हाउ विल राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स? अगर 10 नंबर का है देन यू कैन राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, अगर लगता है कि पूछा है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन मार्क्स, यू कैन डिसाइड दिस इंस्टेंटली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो अपने कान और आंख और दिमाग खुले रखने हैं, राइट, अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है। Okay. Also, somebody have told that the toppers are saying to fill all the pages. अभी टॉपर को टॉपर स्पीच देनी है, तो व्हाट he'll say like मैं तो 18 घंटा पढ़ाई किया, मैं तो सोया ही नहीं था, मैं तो रात दिन एक कर दिया, मैं तो कितना पढ़ा, मैं सारे पन्ने भर देता था, उसी से मेरा सिलेक्शन हुआ है। सी दिस इज ए जस्ट ए ब्लैंड, मतलब एक ना ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे कहानी है पूरी। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो दे हैव एक्चुअली मिसगाइडेड द स्टूडेंट्स हु आर देयर, कि ऐसे आप जबरदस्ती बोगस आंसर लिख के आप यू कांट फिल द पेजेस। और टाइम भी तो होता है, टाइम लिमिट भी होती है, इतना टाइम कहाँ होता है कि आप जबरदस्ती लिख के यू आर गोइंग टू फिल द पेजेस। सो देयरफॉर, है ना, इवन राहुल श्रीवास्तव फिल द पेजेस, पल्लवी वर्मा फिल द पेजेस, ऑल जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सब सब पेपर भरते हैं सारे, पर नॉट बेस्ड ऑन द बोगस आंसर, ठीक है। वो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वेबिनार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेबिनार। उसको जो अटेंड करेगा उसका 20-30 नंबर तो मतलब 10 नंबर पर पेपर मिनिमम बढ़ जाएगा, मिनिमम, ठीक है। 60-70 नंबर तो अगर देखो वही फॉलो करोगे, वर्ड लिमिट वर्सेस टाइम लिमिट, जो और जो पेज भरने हैं, यू विल कम टू नो डेट बहुत डिफरेंस आ गया आपके आंसर में, आपकी आंसर की क्वालिटी में, एज वेल एज मार्क्स ज्यादा मिलने लगे, ठीक है। ये ब्लैंक स्टेटमेंट ये लोग दे देते हैं, एंड लाइक दिस दे एक्चुअली मेक द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स। और लोग सोचते हैं पेज भरना है तो पेज भर के नंबर, कॉलेज एग्जाम थोड़ी ना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम थोड़ी ना है कि आप पेज भर के नंबर मिल जाएगा। देयर इज सेट प्रोसीजर फॉर इट, आई विल टेल दैट, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स तो सारा पेज भरते हैं, और वो कैसे भरते हैं वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। Okay, now coming to this ethical dilemmas. See, whatever the question is there in the examination, you will find mostly two ethical dilemmas will be there, one of them in the examination. ठीक है, एक रहेगा पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल, एथिक्स के बीच का डिलेमा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट लाइक सो दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यू आर द यू आर द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल इन विच योर सन इज ऑल्सो स्टडिंग, ठीक है, एंड देयर इज एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स एग्जामिनेशन है, एंड योर सन इज not good at maths, he is weak in maths. Now your wife want you to कि मेरा बेटा पास होना चाहिए, तुम प्रिंसिपल हो स्कूल के, अब मुझे कुछ नहीं पता, वो पास होना चाहिए, नहीं तो मैं डिप्रेशन में, मुझको हो जाएगा, उसको हो जाएगा, और मैं तुमको छोड़ दूंगी, लड़ाई झगड़ा मतलब सब कुछ। नाउ यू आर एट प्रेशर एट होम, जो आपका पर्सनल लाइफ है, कि आई बिकॉज ऑफ माई वाइफ एंड माई चाइल्ड आई हैव टू make him pass in the examination because I am I am the principal of that school. Okay. Then the second part क्या है ना, but on the other hand you are the principal of a school in which you have to ensure the fair and free examination without any cheating, without any copying or malpractices during the examination, even if it is your son also.
So now you have a prof- personal ethics. Already here, actually, there is a disruption in the electricity. So therefore, I have lost the network and I'm back again. So in case any other disruption will be there for the network, stay here, right? Don't go. I'll come back within 2 3 minutes, right? Okay. So I was talking about the fact that the personal and professional. So it will be the ethical dilemma because you have the ethics of your personal life and professional life also. So both are clashing here. So this is a dilemma. What is ethical dilemma? That you are confused between the two right paths. If you follow this, you are violating the other. If you follow the other, you are violating the previous one. That is the ethical dilemma. ठीक है, क्लियर है. सो एथिकल डिलेमा इज व्हाट, इट इज ए पाथ इन विच बोथ आर राइट. देखिए पर्सनल में क्या है कि आपका बेटा पास होना चाहिए, प्रोफेशनल में क्या है कि कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए. तो ये दोनों चीज आर कन्फ्लिक्टिंग ईच अदर बिकॉज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल. तो दोनों आप ही के साथ मतलब कन्फ्लिक्टिंग है. तो दैट इज व्हाट इज एथिकल डिलेमा. ठीक है, एक ये यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम. नाउ बेस्ड ऑन केस स्टडीज यू विल चेंज इट. पर्सनल क्या है, प्रोफेशनल क्या है, वो चेंज होता रहेगा. पर यू कैन पुट दिस हेडिंग एंड देन यू कैन राइट, है ना, 1 और 2 लाइन की क्या पर्सनल था, क्या प्रोफेशनल था, हाउ इट इज, है ना, बीइंग वायलेटेड. ये लिखना पड़ेगा. क्या करते हैं आप लोग, व्हाट यू पीपल आर डूइंग, आप इतना के स्टेक होल्डर दुनिया भर लिख देते हैं, आपको टाइम ही नहीं होता है. अब आपने पूछा व्हाट आर द एथिकल डिलेमास इन्वॉल्वड इन दिस, आप उसमें लिखा 5 मार्क्स, बट आपको टाइम ही नहीं है. आपने लिखा पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल, खत्म, एंड यू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. कितना नंबर देगा, 1 नंबर देगा, राइट. बट नाउ यू आर गोइंग टू इलाबरेट ऑन दिस बिकॉज इट इज आस्क्ड. नाउ यू आर गोइंग टू इलाबरेट. झूठ मूठ का लिखने से नहीं होगा ना, मेरे इट इज नॉट आस्क्ड, सो यू वोंट बी फेचिंग एनी मार्क आउट ऑफ इट. But now it is asking you what is the ethical dilemma in this case study. Here you have to write each, मतलब elaborate on the ethical dilemma one by one. So अगर होगा तो personal versus professional होगा, then you write what is personal, how it is personal, how it is professional. Then write 1 or 2 sentences describing the personal issue and the professional issue. ठीक है.
Another one is also there, that is also called call of duty versus कॉल ऑफ कॉन्साइंस. ठीक है, ये भी एक तरह का प्रोफेशनल सॉरी ethical dilemma है. How it is, let's see. Call of duty, okay, let us understand this with the help of example. Example is like uh, you are an officer in the telecom industry. ठीक है, आप एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप यू आर एन ऑफिसर. ठीक है, now maybe IAS or maybe secretary, then the government ruling party has asked you to tap the calls and record the calls of the opposition leader. ठीक है, and give them the all the recordings. now now you tell, इसमें क्या है, इसमें कोई पर्सनल इन्वॉल्व नहीं, नो पर्सनल डिलेमा इज इन्वॉल्व. ठीक है, आपका पर्सनल रिकॉर्डिंग तो मांग नहीं रहा है, इज आस्किंग अबाउट द अपोजिशन पार्टी का रिकॉर्डिंग, राइट, देयर वॉइस कॉल, द टैप कॉल्स, व्हाट्सएप, जो भी रिकॉर्डिंग हो सकती थी एज पर द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई, या जो भी आप लोग ने, है ना, जो भी जो फॉर एग्जाम्पल पुलिस करती है, रिकॉर्डिंग करती है, टैपिंग करती है, कॉल रिकॉर्ड, सो इट इज आस्किंग दिस. So here there is no personal involvement, only call of duty and call of concise is this. Like call of duty is what, that they are asking you, your boss is asking to do the recording, right? ये तो ये बात सही कि किसने पूछा, आपको करना पड़ेगा. नाउ कॉल ऑफ कॉन्साइंस इज सेइंग कि दैट इज मे बी इलीगल और नॉट राइट, दैट इज बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन. मतलब कॉन्साइंस है तो मतलब गलत काम करने के लिए बोला ना आपको एक तरह से, ये रिकॉर्डिंग करोगे सॉरी, तो रिकॉर्डिंग करोगे, देन यू विल बी यूजिंग दिस रिकॉर्डिंग अगेंस्ट द अपोजिशन लीडर्स एंड अपोजिशन पार्टी, एंड thus knowing that what is their strategy next, and then the ruling party may operate or break that strategy in some form or the other. So call of duty versus call of conscience is very important. ठीक है, तो ये भी केस स्टडी का पार्ट होता है. So you try to write down these two things, and wherever it is applicable, just apply and understand, write and explain also. इसमें explain करना कि how it is call of duty, how it is call of conscience. एड्रेस नहीं, देखिए एड्रेस तो बोले ना, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन से एड्रेस होता है, गया ना, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन से ही एड्रेस होता है. जो मैंने बोला रिजॉल्व द एथिकल डिलेमास, ये आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो रिजॉल्व करेगा, बेस्ड ऑन केस टू केस होता है, राइट. बट हियर द कॉल ऑफ ड्यूटी, ये आपको बता रहा हूँ, द एथिकल डिलेमास आर देयर, टू टाइप्स ऑफ एथिकल डिलेमास मोस्टली फाउंड इन ऑल द केस स्टडीज. ठीक है, तो ये अप्लाई हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये है, आपको ये लिखना है एग्जाम में. एग्जाम में बस पूछता है एथिकल डिलेमा क्या है, तो लोग एक लाइन लिख देते हैं, प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल, या कॉल ऑफ ड्यूटी वर्सेस कॉल ऑफ कंसाइंस. कभी कभी दोनों भी हो सकता है, पर ऐसा बहुत कम होता है, मोस्टली एक ही रहेगा कोई में से. ठीक है, एंड और लोग क्या करते हैं कि देयर आर वेरियस वेज टू मेक इट्स, मतलब चार पांच लाइन बना देते हैं. कैसे, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल में लिख देंगे फादर वर्सेस टीचर, फादर वर्सेस प्रिंसिपल, है ना, होम वर्सेस स्कूल लिख देंगे. मतलब इट्स बेसिकली सेम थिंग, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल की पार्ट है ना सारा. फिर ऑल्सो गेट की पासिंग ऑफ सन, है ना, वर्सेस चीटिंग इन द स्कूल. See, all these things are basically the one or the same thing and the component of this only. So you can write just one and explain that, right? Instead of writing all four five things, which is basically the same thing only. ठीक है, सो यहाँ भी ये भी टॉपिक खत्म हुआ. ठीक है, एथिकल डिलेमास वगैरह आपको लिखना है तो. नाउ many people will ask me कि सर वी हैव टू राइट द नेम ऑफ थिंकर्स इन केस स्टडी और नॉट, और कैसे लिख देना है. See, first try to understand the purpose of case study. Case study is what? It is based on the practicality or practical knowledge of ethics which you have gathered from your day-to-day activities.
Again, the same problem. Coming back to the, you know, that is the case study. The practical, you know, the practical aspect. The case study is based on the practical aspect and about the knowledge of ethics which you use in day-to-day life. So you have studied the theory part, and theory part is basically the, the literature part of the ethics. But case study is basically the practical part of the ethics. So obviously literature में क्या होता है, thinkers name is there, thinkers quotes are there, various theories are there, है ना, various statements are there by various thinkers which have very much logical value, logical based logic. So many things are there. Now the case study have practicality, knowledge, and ethics. So these two are things are different. Thinkers are there in the theory part. Now, for example, Mahatma Gandhi has said that there is, always be non-violent. Like non-violence is the best policy. So if you're using those things in the case study, it is just means nothing. Why? Case study is based on the cases. They are giving you some cases, practical aspect. You are a collector, you are a SP, and something something, and now this is has occurred. What you will do? And you are saying that Gandhiji has told about the non-violence. That is why I'll follow the non-violence. That means you are not sure of what to do, but because Gandhiji has told, that is why you are going to do that. See, try to understand that whatever thinkers have told, you have to understand that and write in your own words that what you are going to do it. Don't quote any thinker because of those telling me this, therefore I'll do this, because ये थोड़ा सा immature and childish लगता है, right? So as a case study, as a collector or SP, you will write that these things I'll do, and this will be the best course of action. I'll do this, and why? Because of this reasons, right? सो ये चीज आपको फॉलो करना है, नॉट लाइक दिस कि है ना एग्जैक्टली जो थिंकर्स होंगे वो लिख देना. बट नाउ इट इज मेनी पीपल आर राइटिंग थिंकर्स एंड दे आर टेलिंग दैट दे आर getting good marks. See, I don't know that what they are writing and how they are writing. It depends like how you going to present that thinker into your case study. That is also very important, right? Thinkers को as it is present करके उनसे निकालना है, तो it will be very much different thing, right? Okay, so you have to write the thinkers if you're writing, but don't make your answer assume that ki, because of him only you're doing like this, because he said this, so you're doing this. It depends on how you are writing an answer. ठीक है, we'll discuss, है ना, जैसे जैसे questions होंगे last में. Okay, so this is one thing. So basically you can avoid writing the names of thinkers and just write the practical aspect of जो पूछा है वो लिखना. ठीक है, even nobody is expecting you to write the name of thinkers in the case study, but you can always write the names of thinker and their sayings whatever in the theory part, because theory part is basically the literature part of the ethics, and it is very much what you welcome over there that you write the name of thinkers and their statement, their logic, whatever based on the question asked. Okay. सर कंक्लूजन में लिख सकते हैं थिंकर्स का नाम कि बाय फॉलोइंग द अबव कोर्स ऑफ मेथड इट विल बी इन कॉन्करेंस विद गांधीजी's मैक्सिमम. In ऐसा case कुछ. of this one क्या बोलते case studies, right? हाँ सर. केस स्टडी लिख सकते हैं. मैंने बोला ना कि ऐसे नहीं लिखना है कि मतलब बिकॉज ऑफ हिम यू आर ना डूइंग दिस, उसको केस स्टडी में झलकना नहीं है. एंडिंग आप कर सकते हैं विद लाइक दिस व्हाट यू टोल्ड, है ना, इट इज आल्सो इन कंकरेंस विद द गांधी जीज, है ना,
क्या बोलते 7 स्टेटमेंट्स या फलाना प्रिंसिपल या फॉर एग्जाम्पल विवेकानंद, ऐसे लिख सकते हो। बिकॉज लेकिन अब केस स्टडी कंप्लीट हो गया तब लिख सकते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन में तो कोई फायदा नहीं लिखने का, बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग द क्वेश्चन। सो ऐसा कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट लुक लाइक बिकॉज ऑफ दिस you know compare this case study with this statement of this thinker and then you are writing because what the thinker told। नहीं, थिंकर ने जो बोला है उसको आप मॉडर्न सिचुएशन में रखेंगे, उस लॉजिक को अप्लाई करेंगे, देन यू आर कमिंग टू द आंसर दैट मे बी बिकॉज ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता थिंकर का जो लॉजिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ द वेरियस सिचुएशंस जो आपके पास जो एक्ट कर रही है, बेस्ड ऑन दैट यू आर पुटिंग द लॉजिक एंड देन यू आर राइटिंग द आंसर। तो एंड में आप यू कैन राइट इट कि हाँ उससे मिलता जुलता हम किए हैं बिकॉज ऑफ ये ऐसा थिंकर ने बोला, तो ये भी ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं लास्ट में। तो ये हुआ। अच्छा, नाउ कम टू दिस पॉइंट डेट जो एथिक्स की जो तैयारी है उसमें हम लोग क्या क्या और करना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्टिफिकेशन, गगन यू आर राइटिंग नेक्स्ट ईयर ना, तो डोंट वरी, है ना। अभी तो आप लगता है बेसिक नहीं की हो, तो वो हो जाएगा, है ना। यू कैन डिस्कस इन कोर्स ऑफ एक्शन, आई विल डिस्कस लाइक लेट्स सी व्हाट यू टोल्ड। कोर्स ऑफ एक्शन का जस्टिफिकेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे देना रादर देन थिंकर्स कोड ब्लाइंडली अंडरस्टूड। हाँ ठीक है, ब्लाइंडली नहीं देना है ना। व्हाट द what the other person is asking that in the conclusion you can conclude if you're writing a conclusion the case study कि yes because of this मतलब मैंने ये किया, that is in coherence or in concurrence with the this thinker, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। coming to the ethics की, first of all you should know the syllabus, ठीक है। syllabus में सारे जो topics हैं, you see the syllabus of the whole thing, understand the topics, learn them by heart them, क्योंकि वो topics वो words आपको use कर रहे हैं in your answers also, right। तो remember the entire syllabus, remember the keywords of the ethics, है ना, that is there in the syllabus, as well as go through the keywords of ethics in the PYQs also, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन वहां से भी बन जाते हैं, जैसे जैसे एक साल पूछ लिया क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, so there are various chances that कि वो 2-3 साल बाद फिर से in some form of the other they can ask you this question again, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, है ना, यूटिलिटेरियन, ये सब बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, यू शुड ट्राई टू यूज देम इन द आंसर आल्सो, स्पेशली इन द थ्योरी पार्ट, ठीक है। ताकि इट सीम्स कि आपको पूरा कंट्रोल है सिलेबस का, यू नो इट, एंड इट शुड नॉट लुक लाइक एग्जैक्टली द बुकिश नॉलेज, like totally theoretical from the book, but should include the practical aspect also, yeah। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, है ना, ये तो एक पार्ट हुआ कि आपको सिलेबस कैसे लिखना है, तैयारी करनी है। सेकंड, देयर आर वेरियस थ्योरीज और प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स आर देयर, ठीक है। आपने बहुत सारे थिंकर्स के पढ़े होंगे प्रिंसिपल्स, है ना। फॉर एग्जांपल यूटिलिटेरियन हुआ, ठीक है, यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट हुआ, फिर उसके कैटेगोरियल में इंपेरेटिव हुआ, डिकोंटोलॉजी हुआ, ऐसे करके सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, है ना, ठीक है। डिकोंटोलॉजी हुआ, कैटेगोरियल इंपेरेटिव हुआ, मतलब बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स यू विल गोइंग टू फाइंड फ्रॉम द सिलेबस। जो अगले साल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, तो इस साल कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, ठीक है। सो these topics, utilitarian concept, deontology, categorical imperative, everything is there, so try to understand their meanings, ठीक है। try to understand their meanings and maybe you can use them in the theory part wherever you're possible, sometimes you can also use them in the case study also, ठीक है। मतलब ऐसा ना लगे कि आपने पूरा थ्योरी डाल दिया केस स्टडी में, शुड लुक लाइक फ्लूइड, कि वो हाँ थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल चल रहा है, एकदम थ्योरेटिकल ना लगे, और ना ही एकदम सेम टेम्पलेट हर क्वेश्चन में यूज हो, राइट। यही मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। ऑल्सो, है ना, इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स जो हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और उनके कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स होंगे, यू मे रिमेंबर देम ऑल्सो, some of them can be also used in the essay paper also, इवन द ऐसे के कोट्स होंगे जो भी थिंकर्स हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला, गांधी जी ने क्या बोला, है ना, मार्टिन लूथर किंग ने क्या बोला, व्हाट बड़े बड़े लोगों ने क्या बोला, इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द कोट्स और कोटेशन इन यूज्ड इन एसेज कैन आल्सो बी यूज्ड इन एथिक्स आल्सो, ठीक है।
ऐसा तो कोई डिफाइंड नहीं है कि भाई गांधी जी का नहीं यूज होगा एथिक्स में, विवेकानंद का नहीं यूज होगा, वो यहाँ पे थिंकर नहीं माने जाते हैं, ये कुछ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ फ्लूइड है, एनीथिंग कैन बी यूज हियर एंड देयर। तो दिस विल गिव यू टू राउंड, मतलब इसका बेनिफिट है कि यहाँ भी यूज हो जाएगा कोट्स एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट देयर ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक पार्ट हुआ। सी अलग अलग लेवल पे जो भी चंक्स है ना, वो मैं बता रहा हूँ जहां पे लोग एक्चुअली फंसते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट, स्टेटमेंट बेस्ड कोटेशंस या स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, यू नो देयर आर वेरी क्वेश्चंस, उनका स्टेटमेंट होता है, देन यू हैव टू राइट। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में? जनरली द स्टेटमेंट ऑफ ए थिंकर, ये लाइन एक कोई थिंकर का, वेस्टर्न थिंकर का उठा के डाल दिया, उस पे देन दे आर आस्किंग यू द इट्स रेलेवेंस इन सिविल सर्विसेज, या इट्स नहीं वो पूछा कुछ नहीं, दे आस्क समथिंग एल्स दैट व्हाट इज द यूज इन द लाइफ, है ना, हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ एज ए सिविल सर्वेंट, कुछ भी पूछ सकते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो मेनी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करना है, राइट। आई एम गिविंग द ब्रॉड व्यू, एंड ऐसे तो देयर मे बी एनी वे यू कैन हैंडल देम, but some of the best ways, best approaches, I'll tell you that first of all, if you know the statement, define it or explain the statement or explain the quote. डिफाइन कर दो, उसमें कोई कीवर्ड्स है उसको इलाबरेट कर दो, डिफाइन कर दो, अंडरस्टैंड करा दो, ठीक है। और उसके बाद इलाबरेट ऑन द डायमेंशंस, जो भी आपको लगता है उसमें डायमेंशन निकल के आ रहा है, कोई उसमें पॉजिटिव निकल के आ रहा है, कोई नेगेटिव निकल के आ रहा है ना। और जो भी डायमेंशन यू आर फाइंडिंग इट, उसका रेलेवेंट एग्जांपल्स, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और मे बी सम अदर डायमेंशन, आप सम उसका क्या पॉलिटिकल डायमेंशन निकल के आ रहा है ना, सोशल डायमेंशन निकल के आ रहा है, व्हाटएवर यू राइट देम, है ना। डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स का, हाउ मच डायमेंशन यू कैन थिंक ऑफ, वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, ये भी देखना है। जरूरी नहीं कि डायमेंशन पे ही आपको एलाबरेट करना है, द क्वेश्चन में भी समथिंग एल्स आल्सो। सो यू हैव टू वेरी मच एक्टिवली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, गेट कैच होल्ड ऑफ द क्वेश्चन, exactly the substance of the question, and then try to answer it, then elaborate on the dimension based on the question asked, right, with examples. Okay, then in the end, maybe in the conclusion also, you can conclude, right, with its जो statement है, relevance in civil services. See, ethics paper is basically what is based on the is ये जो आपको ले रहा है यूपीएससी, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे वांट द एथिकल सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, बेसिकली इज फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ओनली, द एथिक्स टेस्ट इज देयर। So obviously, whatever statement is there, you should always try to write some relevance and of it in civil services, practical, theoretical, whatever, any you can conclude, you can write as a part of the body also. But if you do not find anything to write there, even you can write in the conclusion also, this is the relevance of the civil service in the modern civil service era or whatever, right, because this will help the examiner understand your personality, that how you're going to use the quotation statement or anything, any ethical concept in the modern civil services. And even when you join civil services, you are going to remember them and you are going to apply them in the practically. Okay, तो ये बहुत एक गुड इंप्रेशन देता है आपका, एंड इट विल हेल्प यू टू फेच मोर मार्क्स। ओके, नाउ एक और चीज है, यू विल फाइंड some of the questions in the examination in which you'll find that there are various words given, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड दिया होता है उसका मीनिंग पूछता है, लाइक 3-4 साल पहले तो काफी आते थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दे विल आस्क यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड इट्स नॉट दे विल आस्क यू मीनिंग, दे विल आस्क यू रेलेवेंस इन द सिविल सर्विस। लाइक फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी, है ना, एंड बहुत सारे हो सकते हैं, परसिवरेंस, पेशेंस, कुछ भी मतलब, ठीक है, प्रूडेंस, राइट, ये सब बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जो कि और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं,
they are asking you the relevance in the civil services. So basically, they are giving you 2 marks for writing the relevance. Basically, you have to tell the meaning also, because meanings के लगभग half marks होंगे उसमें, and plus 1 mark for telling the relevance in civil services. तो meaning जरूर लिखना है, because based on that meaning only the relevance will be there. Based on that meaning only, because आपको meaning पता है prudence का कुछ और relevance निकल रहा है कुछ और, then you won't get marks, right? So based on relevance, based on meaning only, it will be, it will have some relevance in the civil services. Also, examples. Example also you have to write. Okay, without examples, what is the relevance? Okay. So some of the things which I want to discuss is this only in ethics paper. Most importantly, I know you have to always think logical in the terms of case studies, and mostly you have to use your own words, right? Your own words to write an answer, especially in theory paper and ethics में case study में तो definitely there is no way that you can use the bookish language. Per words in the you try to use your own words, your own way to write the answer in theory paper. This will fetch you more marks rather than writing the definition of the words directly which is written in the book you are writing in the examination. वो बहुत क्या बुकिश हो जाता है. एथिक्स पेपर ऐसा पेपर है that is not like GS 1 2 3 in which you have to mug up and write. भाई हिस्ट्री है, यू can't change द हिस्ट्री, यू can't change द ज्योग्राफी. जो किताब में है वही सेम यू हैव टू मग अप एंड राइट डाउन द आंसर. बट इन एथिक्स पेपर इट इज नॉट लाइक दैट. देयर इज नो क्लियर कट दैट इसमें ये लिखना है उसमें वो लिखना है. So it is basically your own thought, your own personality, how you develop from child to a man, how you are trained with your peer group in the college, what do you think of surroundings, how much you are sensitive, how much you are patient, everything it's basically reflected in your answer. So वो उनको चाहिए. The more you write an open answer, more reflective of your personality, and which will be basically what with an emotional intelligence personality, more patience, perseverance, motivated candidate, all the things. If it is very much reflected, definitely you're going to get good marks. But reflected not in general in your bogus answer, in a well structured and a clear cut, with very clear cut dimension and addressing to the question, right? अगर ऐसा होगा then definitely it will be reflected in your answer and you will get more marks. And about the writing the pages in theory and this one, I told that try to first finish the case studies, and whatever time is left devote in the एथिक्स थ्योरी. सी एथिक्स थ्योरी और केस स्टडी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सी जनरली in GS 1 to 3 some of the questions are different and you might not have learned something, कुछ पूछ लिया आपको नहीं पता है, so you cannot write much thing over there. But in ethics everything can be written. वो generalized question होते हैं based on your overall knowledge up till now, based on your personality, based on your the ethics book जो भी हमने पढ़ा है उससे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट निकाल के लिखना है. सो इट इज बेसिकली द ओवरऑल योर नॉलेज बेस है ना. तो इट विल नॉट मेक ए डिफरेंस कि भैया आपको एग्जैक्टली वो लिखना है जो पूछा गया है. ठीक है. सो यू कैन राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन एथिक्स पेपर, सो नो नीड टू लीव एनी क्वेश्चन. सो बेस्ड ऑन दैट your time is divided. Now you have to do the questions of case studies first. Case study में क्या है सारे करने हैं, and all questions have are unknown to you are seeing for the first time. All questions to the theory also unknown to you are seeing for the first time. पर case study में तो you can go with sequential order also. but इसमें कि थ्योरी में दोज आर नोन क्वेश्चंस, मोर नोन, वेल नोन, उनको पहले कर लो फॉलोड बाय द अदर क्वेश्चंस. ठीक है. ये सब मैं ऑलरेडी 1 2 3 में भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वेबिनार में इन ए वेरी मच डिटेल्ड वे. द वे ऑफ प्रायोरिटाइजिंग द क्वेश्चन, द वे ऑफ एड्रेसिंग द क्वेश्चन वन बाय वन, है ना, द वे यू आर गोइंग टू डील विथ ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस, राइट. सो दिस इज द थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस फॉर एथिक्स. ठीक है. और भी चीजें डिस्कस होना बाकी है जीएस 1 2 3 में, एसेज में, and we have the time subsequently it will come, है ना.
because आज हो गया 2 दिन हो गए वेबिनार. Maybe next Sunday, coming Sunday, we'll have one more webinar for the other things. Then we'll proceed like this. ठीक है. So you're going to ask, do you have any question, or we'll close and move to the next topic. And one more thing about the CMP, you people are writing the test. Whenever you are ready for the test, you write down the test. ऐसे जबरदस्ती लिखना नहीं है जाके जस्ट कि यार मैंने पैसे दिए तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ. कुछ लिखने से फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा. You just prepare the subject and then go and write down the test, whether online or offline, right? The copies will be checked, and you can get the mentor call also. ठीक है, आपको mentor call मिल जाएगी. Evaluators in the India by CMP are either the faculties, मतलब those who are associated with my team, with me since so many years. They are the evaluators, not the student who has not qualified the prelims. ये चलो भाई evaluate कर लो. Or the selected candidates, or the candidates who are selected into service this year, they can also be the evaluator. So in any case, if you want to take a mentor call for more information per question, you can ask me, or you can ask the person who has checked the copy, so that they can do this work. Case study prediction. What you told, Ifran? Case study prediction का primary source क्या रखें? See, if I have told this, I think you missed my last webinar, जो संडे को हुआ था. Just read that. हाँ. केस स्टडी का प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी सोर्स. ओके, सी, प्रिपरेशन का सोर्स वॉट एवर यू हैव स्टडीड फ्रॉम द वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो भी आपको मिला है केस स्टडी का बुकलेट, मे बी लुकमांस, 100 केस स्टडीज, जो भी केस स्टडी आप पढ़े ना, आप अब सोल्यूशन वाला ही लेने. So first you read the case study, understand and find out what could be the best option. क्योंकि सी मार्क्स यू विल बी गेटिंग ओनली फॉर बेस्ट ऑप्शन, नॉट फॉर स्टेटस को, नॉट फॉर द, है ना, जस्ट राइटिंग द एक्सट्रीम एक्शन. दैट कैन, एनी पर्सन कैन राइट. आप क्लास 12 के बच्चे को बोलो भाई तुम एज ए कलेक्टर हो तो तुम क्या करोगे, तो कुछ भी बता देगा. सो दैट इज नॉट द बेस्ट कोर्स एक्शन. बेस्ट कोर्स एक्शन इज दैट एज ए सिविल सर्वेंट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. आपका बेस्ट कोर्स एक्शन क्या होगा व्हेन यू बिकम कलेक्टर. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर वो गलत हो गया, या वो बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, मतलब वो लीगल नहीं हुआ, प्रैक्टिकल नहीं हुआ, और वो आउट ऑफ ट्रैक हो गया, यू नॉट गेट मार्क्स. दैट इज वाई बहुत लोग एथिक्स में बहुत कम आ जाते हैं, है ना. वो कहते हैं सबके आ रहे हैं, मेरे नहीं आए. और ऐसा भी होता है कि जनरली किसी के बहुत अच्छे मार्क्स एथिक्स में आते हैं. जस्ट बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द मार्क्स बिलोंग टू द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. द होल मार्क्स बिलोंग टू द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. बाकी का स्टेटस को लिखने का, एक्सट्रीम एक्शन लिखने का कोई मार्क्स होता है? जस्ट एनीथिंग यू कैन राइट. उसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है. दिमाग लगाना है किसमें? द बेस्ट कोर्स एक्शन. दैट इज वाई इट होल्ड्स इंपॉर्टेंट कि मोस्टली हर क्वेश्चन का द लास्ट पार्ट विल बी यही होगा कि व्हाट विल यू डू, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स एक्शन, है ना, हाउ हाउ यू गोइंग टू प्रोसीड, है ना. कोई कोई में पूछेगा व्हाट आर द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू, ये कहीं कहीं पूछेगा, लेकिन ये तो सब में पूछेगा कि व्हाट विल यू डू. और मे बी वन और टू क्वेश्चन में कुछ और पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली द ये एम्फोसिस यही होता है, राइट. So that you can prepare from various coaching materials, but before preparing, just read the question, understand that what you're going to write, then you think कि मैं क्या लिखूंगी, then only you see the क्या solutions. Don't see the question and solution directly. तब आपको याद नहीं रहेगा, अब भूल जाओगे. ठीक है. And whatever you see, make sure that you revise it, the important best course of action only. Best course of action का revision with the relevant cases वही करके जाना, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसका उसका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, समरी है, ये सब तो खुद ही लिख लोगे, कोई जरूरी भी नहीं लिखना है. मैंने बताया था पिछले क्लास में. द इंपॉर्टेंट इज बेस्ट कोर्स एक्शन, और उसका इलाबरेशन कितना कर सकते हो, राइट. एनी अदर क्वेरी? Evaluate offline as through mail. You can collect offline also, or through mail also. You can just call to the reception and find out. Our evaluators are same Kinsuk scholars, sir, Anika madam. अब बिना the Ujjwal sir is there for the evaluation of ethics. उज्जवल सर का फीडबैक बहुत अच्छा रहा है हमेशा से. So he is the evaluator of ethics, and you can get the copies, and you can ask one-to-one feedback call from him. Okay. Vinay, you have already taken last year also, so इस बार भी यही करेंगे. Yeah.
Okay. Any other query? Shall we close? सर क्या मतलब आंसर्स को सर कर सकते हैं क्या? फिर से बोलिए। आंसर्स को क्लब कर सकते हैं कि जैसे पार्ट ए में पूछ रहा है कि वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस क्या है और पार्ट बी के अंदर पूछ रहा है कि ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या लेंगे, तो उन दोनों को क्लब क्लब कर सकते हैं ए और बी को एक साथ करके आंसर में, या फिर सेपरेट सेपरेट रिप्लाई करें? देखो अगर टाइम कम है, अगर टाइम कैन यू एंड यू रनिंग क्या रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, दो क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन है और आपको 10 मिनट्स है, देन यू कैन क्लब एंड राइट ए और बी क्लियरली लिखिए, अंडरलाइन करिए, दोनों क्लब करके लिख दीजिए। पर टाइम है देन यू मेक इट सेपरेटली, बिकॉज ए में पूछा है वेरियस कोर्स एक्शन तो हम लिख दिए वेरियस कोर्स एक्शन, और बी में पूछा है कि बेस्ट क्वेश्चन तो उसमें बेस्ट कोर्स एक्शन को दोबारा लिखिए, जो बेस्ट कोर्स एक्शन है, देन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज बेस्ट कोर्स एक्शन। और एक क्वेरी और है कि जैसे रीअरेंज कर सकते हैं कि जैसे पहला अगर उन्होंने पूछ लिया कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, सेकंड पूछा है कि वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस क्या है, तो मतलब एक थोड़ा सा पैटर्न इरेगुलर हो गया है, तो पहले अपन बी को लिख के ए लिख सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं या फिर फ्लो में करना है ए में? डोंट चेंज द ऑर्डर, लिख दो वही जो पहले बेस्ट क्वेश्चन एक्शन पूछा है, तो यू थिंक फॉर ए व्हाइल कि देखो स्टेटस को तो इजी है, एक्सट्रीम भी इजी है, तो बेस्ट क्वेश्चन एक्शन क्या होगा, वो सोच के लिख दो पहले, देन यू वही तो प्रोसीड लिख, टू द नेक्स्ट पार्ट, है बट ना। कंसर्न ये कि पॉइंट बी में को वापस रिपीट करना है क्या? नहीं वापस भी क्या लिखा है, अगेन ऑल कोर्स ऑफ एक्शन, आगे कोर्स ऑफ एक्शंस। तो लिख देना उसमें, मतलब ये जस्ट रिवर्स हो गया ना। जी तो वही ये चीज होना करना, चाहिए। मेरा ये कहना है ना कि व्हाई टू डिस्ट्रॉय द ऑर्डर, क्यों अपना दिमाग लगा के यूपीएससी में उसमें कंफ्यूजन करें एग्जामिनर को कि पहले बी किया फिर ए किया, कल को वो भूल जाए। मेरे पास तो कॉपी नहीं आ रही है कि मैंने क्या लिखा है मेरे वहां, और वहां ना मेरा कोई से है कि मैं जाके बताऊंगा अरे मेरा तुमने ये चेक नहीं किया। सो हमको ये मान के चलना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है, हम उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, जैसा क्वेश्चन आया है वैसे ही उसको लिख के देंगे, राइट। हम उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ना कि वो मेरे हिसाब से एडजस्ट करे, क्योंकि एग्जामिनर इज क्रूअल, उसको टाइम नहीं है हम आपके दिमाग लगाना, उसका भाई उसका लड़का कलेक्टर तो नहीं बन रहा है, आप बन रहे हैं, कोई बन रहा है, एक्स वाई जेड, उसको कोई फिक्र है, उसको ये चाहिए कि भैया मेरे को सब एकदम सजा सजाया मिल जाए, मैं फटाफट नंबर दूं और घर जाके अपना चाय नाश्ता करूं, ठीक है, अपना पैसा ले लूं। तो हमको भी उसको वैसे ही देना है, एकदम पका पकाया, बिल्कुल संभाल के सब उसको थाली में परोस के, ताकि उसको लगे कि अरे बिल्कुल इसने सब बढ़िया से लिखा है। ये मैं सब बताऊंगा फिर से एक बार, है ना, डिटेल में कि कैसे हम थाली में परोस के देंगे एग्जामिनर को, ताकि जी सर। यस। सर अगर क्वेश्चन का सिर्फ 4 ही मार्क्स है एंड द अगेन क्वेश्चन इज राइट फोर ऑल द मार्कर आंसर, ओनली, थ्री ऑप्शन विदाउट मेरिट। हाँ, फोर मार्कर है तो तो फिर वी विल नॉट राइट द नरेशन डिटेल्स, इट विल ओनली बी फॉर अगर वो लाइक ये समझ में क्वेश्चन क्या कह आंसर रहा है, क्वेश्चन क्या what बोल are रहा है। the what are the various options available before person chooses the event. अगर ये लिखा है व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, तो जस्ट राइट द ऑप्शंस, नो नीड टू मेरिट्स, नो नीड फॉर मेरिट। मेरिट इवेंट कब होता है, जब एनालाइज द वेरियस ऑप्शंस, है ना, जब उस ऑप्शन का एनालिसिस करना है तब रहेगा। ये सालों सर लाइक ये वेबिनार्स अगर मिस हो जाए तो वो टेलीग्राम के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं ना रिकॉर्डेड? मैंने, हाँ, आप टेलीग्राम उसमें है जो प्राइवेट में, उसमें हम उसको डाल देंगे, जो भी रिकॉर्डिंग डाल देंगे। दैट इज वाई जब सबको पता चल गया कि रिकॉर्डिंग मिलेगी तो काफी संख्या कम हो गई है, पहले वाले दिन तो 50 प्लस ओके। था। लेकिन अब बीच में रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, ठीक है, तब सब लोग प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एनीवेज, नोटिस कॉल। ओके, सर ये जो टेस्ट दिया अभी केस स्टडी का, बट उसका मॉडल आंसर डाउनलोड नहीं हो पा रहा, लाइक वो जो पोर्टल है उसके थ्रू। अच्छा, तो इसके लिए मॉडल आंसर एक बार वहाँ रिसेप्शन पे बात कर लीजिए, ओके सर। ठीक है। वहां पे वैसे आपको मिल जाएंगे इधर रिसेप्शन, और मे बी यू कैन टॉक टू द अरविंद सर, है ना। आई फाइंड आउट, आई पुट द नंबर टुमारो, ओके सर। ठीक है। तो आप जो मैंने बताया आपको, वट एवर आई टोल्ड यू, दोज राइटिंग मेल्स, बी श्योर दैट कि आप ये सब यूज करें, नहीं तो आपके नंबर वैसे ही जैसे आ रहे हैं ना वैसे ही आएंगे। ये सब यूज करेंगे आपके नंबर बढ़ जाएंगे, यू विल बी मोर फोकस्ड, यू आर बी मोर प्रैक्टिकल एथिकल, मतलब उस टॉपिक पे आप रहेंगे जो पूछा गया है, आप डाइवर्ट नहीं करेंगे, एंड यू विल इलाबरेट ऑन व्हाट इज आस्क्ड, नॉट व्हाट यू नो। ये सब बहुत खास खास चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, पर हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो आप इसको मिस कर गए तो टोटल सब क्वेश्चन में लॉस होना चालू हो जाएगा, सब में एक एक नंबर भी कम हुआ तो 10 10 नंबर, 15 15 नंबर मतलब कम हो जाता है, ठीक है। और ये एग्जाम बेसिकली एथिक्स का पेपर तो बहुत इजी है, ये तो मार्क की तो लूट मची है, आपको कितने लूटने हैं ये आपके ऊपर है। भाई मार्क्स एथिक्स का क्या है, हर क्वेश्चन हर कोई लिख सकता है,
अब कोई उसमें जो टॉपिक पूछा उससे डिविएट हो गया तो उसको नंबर चले गए। अगर जो टॉपिक पे रहा उस पे इलाबरेट करता रहा, उसमें आगे बढ़ता रहा, एग्जाम्पल लिखता रहा, रेलेवेंस टू सिविल सर्विस को लिखता रहा, है ना, उस टॉपिक पे रहा और डीपर पढ़ा तो और एग्जाम्पल लिखा, तो ही विल स्कोर मोर मार्क्स। तो मैं तो यही कहता हूँ, एथिक्स और ऐसे में भी नंबरों की लूट है। अगर आप ध्यान से भटक गए, है ना, आप उसको ठीक से कैच अप नहीं कर पाए, आपका टाइम मिसमैनेज हो गया, आप मतलब दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गए, देन यू आर गोइंग टू लूज। नहीं तो बेसिकली क्या है कि एथिक्स और ऐसे का तो पूरा नंबर खींचने का ही पेपर है, जितना खींच लिया उतना आगे निकल गया। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ स्पेशली द थ्योरी पार्ट। जो थ्योरी में काफी क्वेश्चन को समझने में भी गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, और जो केस स्टडी है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो पूछा है वो लिखना है। अगर उसमें आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं पता है, आप श्योर नहीं हो, कंफ्यूज हो, तो ही नंबर कम मिलेगा। अगर आप श्योर हो कि बेस्ट कोर्स एक्शन ये जो मैंने पैरामीटर बताया है, बेस्ड ऑन दैट, तो डेफिनेटली आप उसको लिख पाओगे। ठीक है, बाकी आप केस स्टडीज जो आप टेस्ट लिख रहे हैं उसमें आप डिस्कस कर लीजिए विद द इवैल्यूएटर्स, विद द मेंटर्स, और फिर कोई भी दिक्कत होगी तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। ठीक है, ओके, बाकी ऐसा मत समझो कि विल बी ऑलरेडी, अभी तो बहुत टाइम है, तो 2 ढाई महीना है। दोज पीपल हु आर न्यू, जो यहाँ फ्रेशर हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा कैसे होगा 3 महीने में, 3 महीना क्या 2.5 महीना है, उससे भी कम हो रहा है टाइम, 2 महीने में कैसे होगा? आई एम टेलिंग यू, अभी नहीं होगा, आगे भाई, अभी एग्जाम 2 महीने से ऊपर है, अभी एग्जाम होगा। इफ आई टेक योर एग्जाम टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, तो आपका नहीं होगा। ठीक है, आपका नहीं होगा, और जो यहाँ टॉपर है वो उसका भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स आप उतना पढ़ाई कर लीजिए कि आफ्टर 2 मंथ्स आपका होने वाला हो जाए। आप यही सोचिए कि मेरा अभी नहीं हुआ है, बट डोंट वरी, आफ्टर 2 मंथ्स आई विल बी, मतलब इन द लिस्ट, मतलब मेरा सिलेक्शन वाले लेवल पे होगा मेरा नॉलेज। अभी तो किसी का नहीं है, अभी तो 2.5 महीना है, 2 महीने से ऊपर है, तो क्यों डरना है? लेकिन हर दिन का इस्तेमाल करना है, कंसिस्टेंसी इज द की। एवरी डे यू हैव टू स्टडी 7 to 8 आवर्स विथ, मतलब रिलेवेंस। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, वो आप ध्यान रखिए। क्या बताया था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, whatever you are studying, if you are making sure that you are going to revise it 3 times at least, then only take up that book or booklet, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए ये आपका बहुत ही बड़ा गाइडिंग लाइट है। तो क्या होगा, आपका मटेरियल कम हो जाएगा और वही मल्टीपल टाइम्स चलेगा, तो वो रिकॉल बेटर रहेगा, माइंड में रिवीजन रहेगा, है ना, एंड यू विल बी एबल टू एड्रेस द क्वेश्चन इफेक्टिवली। ठीक है, ये वाला एक की है। ठीक है, उसको यूज करो आप। ठीक है, यस, ये क्या जाना। सर मुझे ये पूछना था कि जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अभी हमने डिस्कस किया, तो उसका मतलब जस्टिफिकेशन कैसा करना है फिर? क्या करना है? जस्टिफिकेशन कैसा करें? जस्टिफिकेशन देखो, अगर पूछेगा, जनरली पूछेगा व्हाट विल बी योर बेस्ट क्वेश्चन एंड व्हाई, तो मैंने बोला ना, वो बहुत सारे काउंट्स में वो आपका खरा होता रहेगा, लीगल, एथिकल, लेकिन ये लिखना नहीं है। दिस इज योर ओन वे ऑफ फाइंडिंग आउट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। ये लिखना नहीं है, लेकिन इसको घुमा फिरा के आप लिखा लिखा जा सकता है। नॉट लाइक दिस ब्लंडली की एथिकल, लीगल, प्रैक्टिकल, है ना, एस्केपिस्ट नहीं है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसको लिखने का तरीका है बेस्ड ऑन द केस स्टडी। ये केस स्टडी जैसा पूछा है उसके बेसिस पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये मेरा ये एथिकल डिलेमा रिजॉल्व किया, है ना। ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द लीगल स्टेप विच ए कलेक्टर शुड टेक, है ना, बेस्ड ऑन द एथिकल लाइबिलिटीज ऑफ ए कलेक्टर। ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं ना, ये वर्ड्स आप यूज करके स्टेटमेंट बना के उसको जस्टिफाई कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो से कि बिकॉज ऑफ दिस क्या सिचुएशन, दिस हैज टू बी टेकन स्टेप, है ना, विच सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इज ऑल्सो टोल्ड दैट, अगर लगता है कुछ उससे मिल दिया, या इन द प्रीवियस, है ना, कभी हुआ था हिस्ट्री में ऐसा। तो ये डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। तो ये सब यूज करके आप अपने जस्टिफाई कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो से, तब भी नहीं पता चलता है तो यू कैन ऑलवेज से दैट द मेरिट्स, these are merits which are higher merits than any other options. So here merits outweighs demerits. जो मेरिट्स इतने सारे हैं, इतने ज्यादा, वो क्या प्रबल मेरिट है, हाई रैंकिंग मेरिट है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसे मिला जुला के आप सब चीज लिख सकते हैं उसमें, राइट। ओके, हाँ, थैंक यू सर। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि डोंट वरी, give your time, 2.5 months, 2 months, something is sufficient for anyone who is writing first main। जो पहला मेंस लिख रहा है उसके लिए भी सफिशिएंट है, जिसका आखिरी मेंस है उसके लिए भी है, प्रोवाइडेड यू आर स्टडिंग एवरी डे, प्रोवाइडेड यू आर सीइंग योरसेल्फ एवरी डे कि मैं कहाँ कहाँ पहुंच रही हूँ, अपना रास्ता दिख रहा है कि नहीं, कि 15 दिन में मेरा एथिक्स कहाँ पहुंचेगा, 10 दिन मेरा GS1 कहाँ पहुंचेगा,
अगर वो दिख रहा है तभी आपको आप एक टाइम टेबल बना लो, अपना पाथ बना लो कि इतने-इतने महीने में, इतने-इतने हफ्ते मेरा ये हो जाएगा, ये टेस्ट पूरा हो जाएगा। तब तब आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और तैयारी कितनी भी हो या ना हो, 2 महीने में तैयारी हो जाएगी। इस विश्वास के साथ यू आर गोइंग टू स्टडी। अगर ये विश्वास है कि मैं 2 महीने में पूरा तैयार कर लूँगा, तो डेफ़िनिटली आप तैयार कर लेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप तैयार नहीं कर पाएँगे, तो डेफ़िनिटली आप तैयार नहीं कर पाएँगे। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही होगा, इसलिए आई एम टेलिंग यू दैट बिलीव इन योरसेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। हाँ, बताइए प्रितपाल। सर वो GS2 शुरू हो गया था ना मैक्सिमाइजर में, तो उसके लिए आपको मैसेज किया था, वो देख लेंगे क्या आप? क्या चीज़, क्या चीज़? सर वो GS2 के सोर्सेज के बारे में मैसेज किया सर आपको। अच्छा, जी मैंने बताया था, कल क्लास किए थे, संडे को किए थे ना? जो मिसिंग रहेगी मुझसे कॉल पूछ लेना, ठीक है? ठीक है सर। बिल्कुल, वैसे तो लास्ट ईयर जब किए थे मेरा कोर्स पहले 2 साल पहले, तब उसमें भी तो मैंने बताया था, कुछ उसमें ऐड सर ऑन तब करना तो था। मैंने मेन 365 और किया था सर, अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। मेन। ठीक है, डिस्कस कर लेना वैसे। ठीक। ठीक है, और बताइए? नहीं तो विल डू दिस, विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वेबिनार, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। सबसे रिक्वेस्ट है सब लोग ऑनलाइन लेना, ताकि आपके डाउट्स उसमें सॉल्व हो जाए। रिकॉर्डिंग देखने से फायदा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना आप वन टू वन यहाँ रहेंगे। राइट? यस गगन। हाँ सर, मैंने अभी टेस्ट नहीं लिखा है, मतलब इसका एक भी, तो मतलब कब तक लिखना चाहिए सर, पूछना था। व्हाट? इथिक्स का टेस्ट नहीं लिखा है, जो पहला था ना, मतलब 25 जून का, वो हम्म। भी नहीं लिखा है मैंने अभी तक, तो मतलब पूरा सब्जेक्ट कोई लिखूंगा, बात क्योंकि फुल कोई लेंथ बात है। नहीं, गगन, यू मतलब आप डेट सारी फ्लेक्सिबल है, यू प्रिपेयर एज पर योर ओन प्लान एंड यू कैन राइट ऑन द टेस्ट एनी डे। ओके सर। मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है? श्योर। थैंक यू। ओके, ओके देन, थैंक यू ऑल। नहीं तो कोई मैसेज, कोई क्वेरी, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, डिस्कस विद मी, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।